children, welcome back to my channel, The White Light Education. So how are you all? I hope all of you are doing well and I am also feeling well now. And previously we have discussed about our national festival, right? So today children, we will discuss about our religious festival. And before starting my explanation, I want to say one thing, that first watch my video. If you think that my video is useful, so then you can subscribe my channel, like and comment, and also share with other children, that other children will be benefited. Okay, तो सब जो बच्चे हैं, तुम लोग की फ्रेंड्स है, कजिन्स है, उन लोगों के साथ भी शेयर करना, तो ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प हो जाए. ठीक है चिल्ड्रेन? So children, today's topic, our religious festival. So children, first we will know that what is festival. So festival is a moment of joy. Festival brings joy, happiness in our life, right? And we celebrate these festivals with our near and dear ones, है ना? हम सब अपने जो फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब जो हम लोग के जो लव्ड वंस है, उनसे हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. खुशियों से हम लोग की जीवन भर जाते हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए. सो चिल्ड्रेन, वी कैन से दैट देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स we celebrate, right? And India is the country where most of the festivals are celebrated in the whole world, and that is why India is known as the land of the festival. What? Land of the festival, है ना? And we can say one thing, that there is not a single month which goes without celebration, without festivals. कोई भी एक मंथ ऐसे नहीं होते कि जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होते, कोई फेस्टिवल नहीं होते, right? And there are some festivals which are celebrated throughout the country. पूरे कंट्री में सेलिब्रेट होते हैं, like our national festivals. And some festivals are celebrated in some states, and each and every festivals, they are celebrated for different kinds of reason. तो जो festivals होते हैं ना, तो उसके पीछे different टाइप के रीज़न भी होते हैं एक एक festivals के पीछे. So children, today we will discuss about our some religious festival. ठीक है? So our first religious festival is Durga Puja. So children, Durga Puja. Durga Puja is the biggest festival, right? And Durga Puja is also coming. After 1 month we will celebrate Durga Puja, है ना? सब सेलिब्रेट करेंगे और अभी से शॉपिंग करना भी स्टार्ट हो गए, राइट? सो चिल्ड्रेन, दुर्गा पूजा, this is the biggest festival, and this festival is celebrated in the month of September, October, in the autumn season, है ना? So in this festival we go for pandal hopping, we wear new clothes, so we worship goddess Durga who killed Mahishasura. So who is Mahishasura? The king of the demon, right? So we can say that this festival symbolizes the victory over the evil. We celebrate this festival for 4 days, and on the last day we immerse goddess Durga in the river, and then after immersing we wish to each other and
used to say that Shubho Vijaya. তাই তো বলি তো? Okay, so this is our festival Durga Puja. So now children, we will discuss about our next festival, Christmas. Okay? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey children, now we are going to discuss about Christmas. So, in every year on 25th December we celebrate Christmas, right? So we can say this festival commemorates the birth anniversary of Jesus Christ. We worship Jesus Christ as the Son of the God. And that day we decorate our house with candles, lights, Christmas tree. We decorate Christmas tree with stars, bells, and that day also we make delicious yummy cake. ना है ना, मम्मी बनाता है ना डिलीशियस यमी केक हम लोग के लिए. So every year on that day we go to church and pray for our near and dear ones, their happiness, their long life, their good health. Okay, and children, who comes on that day? Can you tell me? Yes, Santa Claus. So Santa Claus comes on that day and he brings lots of gifts for us. And children, actually जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन के लिए ये सेलिब्रेशन है बिगेस्ट सेलिब्रेशन. But we also celebrate this celebration, this festival. We also go to church, we also decorate our house, we also make cake. So we also celebrate this festival with our friends and family, right? So this way we celebrate Christmas. Now next, our religious festival is Eid. Hey children, now we will discuss about our next religious festival, वो है ईद. So ईद और ईद उल फितर, जिसका हम मीठी ईद भी बोलते हैं, ईद है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं रामादन. वो एक होली मंथ है जिसमें हम फास्टिंग करते हैं. ओके, so this festival actually marks end of the holy month Ramadan. Okay, and जो हम लोग की मुस्लिम जो भाई बहन हैं, तो हम सब एक दूसरे को हग करते हैं. We hugged each other and we wish them to say Eid Mubarak. And that day also we wear new clothes and we make delicious food at our home. So this way we celebrate Eid. Okay, now next our festival is So children, our next festival is Diwali. So Diwali, we celebrate this festival after Durga Puja. दुर्गा पूजा के कुछ दिनों बाद ही दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं. एंड दिवाली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. Why? As because on that day we decorate our house with
lights, diyas, and we make rangoli also. Right, children? So, that day we worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha. Actually, children, ये जो सेलिब्रेशन है दिवाली, ये सेलिब्रेशन वो क्यों होता है? क्यों ये दिवाली में हम इतने सारे लाइट्स से पूरा घर, पूरा मोहल्ला हम लोग सजाते हैं? लॉर्ड रामा, दिस फेस्टिवल celebrated in the memory of Lord Rama. Lord Rama, who returned Ayodhya after 14 years of his exile. 14 years वनवास के बाद वो जब अपने जो घर है अयोध्या में, वहाँ वो लौटे थे। और किसको हरा के? रावणा उसके साथ उसका जो फाइट हुआ, तो रावणा को वो हरा के अयोध्या में आए थे। और इस खुशी में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस वे वी सेलिब्रेट दिवाली। दैट डे children burns firecrackers with their friends and families, and everyone laughs that day and enjoys very much. जो दिवाली में हम एक दूसरे के साथ बहुत ही enjoy करके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। Now next, our festival is Holi, and for today this festival is last festival. अपकमिंग जो वीडियो है उसमें हम फिर से नए कुछ फेस्टिवल्स के बारे में हम जानेंगे, as because there are so many festivals in India, है ना? Not only national festival and religious festival, but there are cultural festivals, harvesting festivals, seasonal festivals. Okay, so we will discuss about some other festival on my next video. Okay, now next we will discuss about our last, जो आज के लिए जो लास्ट फेस्टिवल है वो है होली। होली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। For today, our last festival is Holi. So, Holi is one of the most popular festival. This festival is a colorful festival, है ना? तो होली को हम क्या बोलते हैं? होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं। So children, every year we celebrate this festival in the month of February-March. Holika Dahan happens before a day of Holi. तो होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन जो होते हैं उसको हम मनाते हैं, ठीक है? And on that day children sprays colors to each other, and we also handshake with each other, hugged with each other, and wish each other happy Holi. We also play with colors. So this is a very beautiful and colorful day. So this festival brings lots of loves and fraternity in our life, and we celebrate this festival with lots of happiness and joy. तो ऐसे ही हम लोग की एक के बाद एक फेस्टिवल्स आते हैं हर साल, और हम लोग
एक दूसरे के साथ, हम लोग की जो फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, उन लोगों के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो चिल्ड्रन, आज ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ और हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे जो फेस्टिवल्स होते हैं लाइक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रहना, ठीक से रहना, मुस्कुराते रहना और खुश रहना। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।